Hello, dear students. Welcome to English Funda. I'm English Guru, and this is the first session on critical reasoning. Critical reasoning में syllogism का ये पहला वीडियो है. लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, if you're in this video in the initial stages, that is the first video you're seeing is this, then I would please ask you to go back to RC video 1 and watch the concepts, क्योंकि उसके बिना आप ये syllogisms पहचान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे. बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैसेजेस ये आपको समझ में आने चाहिए. पैसेज के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग और कुछ नहीं है. पैसेज के अंदर में लिखे हुए इन्फरेंशियल क्वेश्चंस का कैसे आंसर करेंगे. इन्फरेंशियल क्वेश्चन का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. पैसेज के ऊपर में जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं उसको ही हम क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं. क्वेश्चंस अलग अलग से आ जाते हैं, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं और अलग से भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्रिटिकल रीजनिंग इज नथिंग बट जो डेटा दिया हुआ है पैसेज में, उस पैसेज के ऊपर में आप क्या गेस कर सकते हो. व्हाट कैन बी गेस्ड, इट विल नॉट बी रिटन. You have to guess the answer. It's more like mathematics where I say 2 plus 3 is equal to what? That is what is critical reasoning. Is that clear? So, if you want to learn critical reasoning well, the first thing you should have, the first knowledge you should have is about the two components of the passage. Passage में दो components होते हैं, premise और conclusion. वो बिना जाने आप syllogism नहीं कर पाओगे. Now, what is syllogism? Let's understand and let's learn more about critical reasoning. Okay? Now, this I taught you in the reading comprehension class. Let us understand the two components of an argument. An argument is the passage. In the passage, the author has two things. The supporting element called the premise, and based on the premise, he draws a conclusion. Okay? These are the two things that constitute an argument or a passage. Passage के अंदर जो चीजें होती हैं, पैसेज को हम आर्गुमेंट कहते हैं. प्रेमिस होता है, सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, कंक्लूजन होता है. कितने सपोर्टिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं सर? एक भी हो सकता है, कई सारे भी हो सकते हैं. कंक्लूजन एक ही होता है. मेनली कंक्लूजन एक ही होता है. मेन कंक्लूजन एक होता है. कई सारे छोटे छोटे कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, ड्रॉ कर सकते हैं डेटा के ऊपर में, लेकिन मेन कंक्लूजन एक ही होता है ना. और प्रेमिस बहुत सारे हो सकते हैं, एक से ज्यादा रीजन हो सकता है ना. Identify the premise and the conclusion. Now, this you can do only when you have done the first part of RC. Premise क्या है? कारण. Conclusion क्या है? उससे कारण के ऊपर निर्धारित निष्कर्ष. Okay? On the basis of the reason, what conclusion you can draw. So, premise is the reason and conclusion is the result that you can draw from the premise. So, tell me from A, which ones are the premise and which part is the conclusion. Okay, do that for all the questions. Stop, be ready, and then I'll give you the answers. Okay, now forest fires are destructive. This forest fire is going to be destructive. तो ये लग रहा है कि सर ये premise है. हाँ, फॉरेस्ट फायर्स क्या होते हैं? डिस्ट्रक्टिव होते हैं. इसीलिए ये फॉरेस्ट फायर भी डिस्ट्रक्टिव होने वाला है सर. तो ये तो रिजल्ट लग रहा है. ये तो रिजल्ट लग रहा है. दिस द प्रेमिस एंड दिस द रिजल्ट. नाउ नेक्स्ट वन. ऑल मेन आर मॉर्टल, देयरफॉर रवि अ मैन इज मॉर्टल. सारे आदमी मॉर्टल हैं, तो रवि जो कि एक आदमी है वो भी मॉर्टल है. तो ये लग रहा है कि सर प्रेमिस है और ये लग रहा है कंक्लूजन है. Let's read the third one. All the cricketers who play for India wear helmets. Ravi wears a helmet. Therefore, Ravi plays for India. This may be true or false. We are not worried about that. I'm just asking you which one is the premise and which one is the conclusion. So, all the cricket players who play for India wear helmets. Sir, ये एक premise है. Ravi wears a premise. ये भी एक premise है. इससे क्या ये conclusion मैं निकाल सकता हूं? वो तो अलग बात है कि ये सही है कि गलत है, लेकिन ये कंक्लूजन है और ये दोनों हमारे प्रेमिस है. कम टू द D1. द बॉल आई थ्रो विल कम डाउन एज एवरीथिंग दैट गोस अप कम्स डाउन. जो भी मैं ऊपर फेंकता हूं नीचे आता है, इसीलिए ये जो बॉल मैं फेंकूंगा वो भी नीचे आ जाएगा. तो ये कंक्लूजन हुआ.
ये प्रेमिस हुआ। फिर द कैट ड्रैंक द मिल्क बॉल इज एम्प्टी एंड आई सॉ द कैट कमिंग आउट ऑफ द किचन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कैट ने ही दूध को पिया होगा, कंक्लूजन मैंने ड्रॉ कर लिया। द मिल्क बॉल इज एम्प्टी, प्रेमिस नंबर 1। आई सॉ द कैट कमिंग आउट ऑफ द किचन, प्रेमिस नंबर 2। तो दो प्रेमिस के ऊपर मैं अपने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। Okay, now that is the first idea you should have about a passage. पैसेज में ये एक दो सेंटेंस नहीं होता, कई सारे सेंटेंस होते हैं, उसमें से आपको समझना पड़ेगा कि कंक्लूजन कौन सा है और सपोर्टिंग प्रेमिस कौन सा है। अब इसके ऊपर हम क्रिटिकल रीजनिंग सीखते हैं कि भाई इसमें जो लिखा है इसके अंदर में कई सारी चीजें छिपा हुआ भी है। फॉरेस्ट फायर्स आर डिस्ट्रक्टिव, द फॉरेस्ट फायर्स, दिस फॉरेस्ट फायर इज आल्सो गोइंग टू बी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो सर इसकी से कुछ अंदाज भी किया जा सकता है, कुछ ओपिनियंस भी फॉर्म किया जा सकता है, इस डेटा से किया तो जा सकता है। जो लिखा हुआ नहीं है, जो गेस कर सकते हो, उसको हम क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं। और उस क्रिटिकल रीजनिंग में कई सारे टर्म्स हैं, कई सारे शब्द हैं जो हमको सीखना है, जो कि आपके क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। ओके, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोजिज्म। सिलोजिज्म पढ़ाने के पहले मैं आपको रीजनिंग के तरीके बता रहा हूं, किस तरीके से वी रीजन आउट, किस तरीके से हम अपना लॉजिक लगाते हैं पैसेज के ऊपर में। तो पहला लॉजिक है, उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग होता क्या है सर? व्हेन अ जनरल स्टेटमेंट थियरी इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर ड्रॉइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन्स और ऑब्जर्वेशंस। सुनो, फॉर स्पेसिफिक कंक्लूजन्स, ध्यान से सुनना। एक जनरल स्टेटमेंट जिसको कि मान लेते हैं कि हर जगह होता है, इसीलिए मान लिया जाता है कि ये एक जनरल स्टेटमेंट को ले लिया जाता है, उस पे आधारित एक पर्टिकुलर कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स आर डिस्ट्रक्टिव। कौन से फॉरेस्ट फायर? सारे। इसीलिए ये फॉरेस्ट फायर भी डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। ठीक है, तो यहां मैंने क्या किया, एक जनरल स्टेटमेंट दिया और यहां पर मैं इस फॉरेस्ट फायर के बारे में बात किया, स्पेसिफिक। सो ये जनरल स्टेटमेंट है जिसके ऊपर में एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकला, एक जनरल प्रेमिस है जिसके ऊपर में आपने स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाला। जब भी ये करोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे डिडक्टिव रीजनिंग, इसको हम बोलेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। ऑल मेन आर मॉर्टल देयरफॉर रवि अ मैन इज मॉर्टल। अगेन हम एक बंदे के बारे में बात कर लिया, पहले एक जनरल स्टेटमेंट था, सबको ऑल एनकंपासिंग था। ठीक है, एक थियरी मैंने रख दिया, उसके सामने में एक कंक्लूजन ड्रॉ किया उस बेसिस पे, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे। ये सच भी हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा आधार है, ये मेरा प्रेमिस है जिसके ऊपर में मैंने इस कंक्लूजन को ड्रॉ किया है। फिर all the cricketers who play for India wear helmets. Ravi wears a helmet, therefore Ravi plays for India. Again, I have drawn this conclusion on general statements. All the cricketers type का, ठीक है। अब इसी को, इस डिडक्टिव रीजनिंग को समझने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है सिलोजिज्म। To understand deductive reasoning, that is from general observations to specific conclusion, जनरल स्टेटमेंट से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए जो डिडक्टिव रीजनिंग यूज करते हैं, फॉर दैट वी यूज अ टूल, something that will help us understand these statements and the conclusions drawn on these statements. Those are called syllogisms. Is that clear? अब हम समझने की कोशिश करते हैं what is inductive reasoning. Now, inductive reasoning is where you take a number of specific observations, individual observations या individual examples लेकर, अलग अलग example लेकर एक general conclusion draw करेंगे. So specific observation से general conclusion करेंगे तो inductive reasoning है. Deductive reasoning क्या था? general observation से स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल रहे थे। ओके, अच्छा। और जब डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे थे तो उसको समझने के लिए मैंने बताया कि टूल्स क्या यूज करेंगे, हम सिलोजिज्म यूज करके समझने की कोशिश करेंगे। सिलोजिज्म इज अ टूल टू अंडरस्टैंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग को समझने के लिए हम कौन से टूल्स यूज करते हैं? स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करते हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, एनेक्डोटल डेटा यूज करते हैं। व्हाट इज एनेक्डोट्स सर? एनेक्डोट्स मतलब अलग अलग इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, ये इंडिविजुअल डेटा, ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को लेकर के। फिर प्रेडिक्टिव
लगता है कि इसके बाद यही होगा। ये प्रेडिक्शन मॉडल को यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, एनेक्डोटल मॉडल्स, प्रेडिक्टिव मॉडल्स, ये यूज करके हम इंडक्टिव रीजनिंग करते हैं, और डिडक्टिव रीजनिंग के लिए भी यूज सिलोजिज्म्स। वेल, एग्जांपल्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। सर आपने बोला कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है, याद देखना। रवि, अ यंग मैन लव्स पिज्जास। Ravi is a young man who loves pizzas. Smriti, a young woman, loves pizzas. Smriti also loves pizzas. Okay, so there is one example here. There is the second example here. My siblings love pizzas. My young siblings love pizzas. Now, who are young siblings? These are mere साथ में जन siblings are sahodar, people who have taken birth together, that is brothers and sisters. They also love pizzas. So here there is a third specific observation, and then I draw the conclusion. Therefore, youngsters love pizzas. यहाँ एक general conclusion कर लिया, यहाँ एक general conclusion कर लिया. Now this is called inductive reasoning. In inductive reasoning, we take specific observations. Based on that, we draw a general conclusion. Now let's look at one more example. Ravi has got admission in a top college after studying at English Funda. English Funda में पढ़ने के बाद रवि को top law college में admission मिल गई. Suresh, Mani and Rita have also made it to top law colleges after studying at English Funda. यहाँ पर मैं फिर तीन हमने अलग-अलग individual observation लिखा. Therefore, English Funda is the best platform for law college entrance examinations. Now, this is a general conclusion to this. Okay? हमने क्या देखा कि individual प्रेफरेंसेस को देखते हुए मैंने एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि दिस मस्ट बी द केस विद यंगस्टर्स, ऑल द यंगस्टर्स. उसी तरीके से रवि ने इंग्लिश फंडा में पढ़ा, सुरेश, मनी, रीता ने इंग्लिश फंडा में पढ़ा, इसीलिए इंग्लिश फंडा सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी मैंने बता दिया. अब ये भी कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर लिया, 3-4 लोगों के बेसिस में ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया. अब होता क्या है कि आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि ये जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है इसको आप क्या मानेंगे. इसके लिए आपका डेटा तो है, तो इस डेटा के अनुसार इसको वैलिड कंक्लूजन माना जाए या इनवैलिड कंक्लूजन माना जाए. मतलब क्या ये कंक्लूजन ठहरेगा. हाँ, कोई ये तो नहीं बोलेगा कि बेवकूफी कर रहे हो, सिर्फ 3 आदमी का बता करके आप बोल रहे हो कि ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, ये कंक्लूजन वैलिड है या इन कंक्लूजन इनवैलिड है. ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि whether a conclusion drawn on a set of premises is valid or invalid. For that, we need to understand syllogisms for deductive reasoning. You might ask me, sir, syllogisms are used for only deductive reasoning. But what about these tools? Are we not going to learn about statistical tools, anecdotal tools, and predictive tools? No, we are not going to learn them because these are specialized fields of study. इसके लिए आपको 3 साल पढ़ करके करना पड़ता है. सिलोजिज्म्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, और सिलोजिज्म जान के रखने पर ही, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स दैट आर बिल्ट इन योर एग्जाम्स आर यूज्ड टू डूइंग सिलोजिज्म्स. Okay, and then inductive reasoning is quite easy in the sense, if suppose I draw a conclusion like this. Okay, I cite only 3 people. Okay, I cite 3 people and draw a generalized conclusion. Maybe I'm wrong. I don't have data representative of the entire group. कम से कम यंगस्टर्स का अच्छा खासा ग्रुप ले लूं तब तो मैं इसको बोलूं कि ये ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ किया सकता है. Just by using 3 pieces of data, it's not going to work. That is easy for everybody. It's easy to understand. But syllogisms based on, that is deductive logic use करके जो conclusion draw किया गया है, उसके conclusions को समझना उतना आसान नहीं होता, इसलिए हम syllogisms यहाँ पर मैं सीखेंगे. Now, this is a logical tool to reach conclusion. There are premises, okay, assumed to be true. That is, there are general premises. There are general premises assumed to be true on which a conclusion is made. And then the 4 basic propositions, the 4 basic deductive reasoning statements are given in the next slide. There are only 4 statements, general statements, that we need to understand to draw conclusions from. ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट कौन से हैं? डिडक्टिव रीजनिंग के 4 स्टेटमेंट कौन से हैं? The 4 premises are, we can also call them propositions, okay, and all the 4 statements together can be called categorical syllogism. Now, categorical syllogism falls under
डिडक्टिव रीजनिंग का, नाउ अंडरस्टैंड दिस वेल, डिडक्टिव रीजनिंग में one of the tools we use is syllogisms, and syllogisms are divided into different categories. The first category is called categorical syllogism, and within the categorical syllogisms we have 4 premises. This is what I'm teaching you now. I'm teaching you syllogisms, categorical syllogisms, and 4 premises of the categorical syllogism, how to draw conclusions from them. Now the first one is called all x or y. The first one is called all x or y. All x or y तरीके का, मान लो कोई भी स्टेटमेंट दिखाई देता है, सर x और y यूज करेगा क्या? नहीं, मान लो x के जगह पे कुछ भी बोल दिया, मैंने बोला all books, और y के जगह कुछ भी बोल दिया all books are tables. तो बोले सर बुक्स और टेबल्स में क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन तो है नहीं. वी आर सपोज टू थिंक ऑफ बुक्स एज x and tables as y. So without thinking about the items, we will think about the entire statement. मान लो all x और y हुआ और उस पे मैंने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए, तो वो कंक्लूजन्स वैलिड है या इनवैलिड है, ये हमें पढ़ना है. और कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का पहला जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव. याद रखना है एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई के बारे में नहीं सोचना है. बुक्स और टेबल्स लिखा तो बुक्स टेबल्स के बारे में लिखा तो सुनने कब बुक्स कब टेबल बन गए या टेबल कब बुक्स बन गए, ये नहीं सोचना है. सोचना है कि ये ऑल एक्स और वाई लिखा हुआ है और इस स्टेटमेंट का नाम है यूनिवर्सल अफर्मेटिव. ऐसा नाम क्यों है सर? क्योंकि इस स्टेटमेंट को देखो, इसमें नो, नॉट, नथिंग, नोबडी वगैरह वर्ड नहीं है. जहां पर नो, नॉट वगैरह वर्ड नहीं है, नो, नॉट, नथिंग, नोबडी, नेवर, अगर ये सब वर्ड्स नहीं है तो वैसे सेंटेंस को बोला जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस. ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है. और ये सेट कौन सा है? कैसा सेट लग रहा है? सबसेट लग रहा है या पूरा सेट ही लग रहा है? तो मतलब कि सर ये तो पूरा सेट, ये सबसेट लग रहा है या पूरा इंक्लूसिव सेट लग रहा है, सब चीज को लेता हुआ, तब तो तुम बोलोगे सर ये तो यूनिवर्सल सेट है, ये तो यूनिवर्सल सेट है. तो इस स्टेटमेंट का नाम हो जाता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव. बहुत सिंपल है. अगला स्टेटमेंट देखो, नो एक्स और वाई. सर नो आ गया तो नेगेटिव हो गया, और फिर नो एक्स और वाई सारे के सारे नहीं, ऑल एक्स और नॉट वाई टाइप का इसका मीनिंग है. तो यहां पर में भी क्या हो गया, ये यूनिवर्सल नेगेटिव है. तो मुझे ये समझना है कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव पे कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा तो क्या वैलिड है नहीं वैलिड है, ये समझना है. नो एक्स और वाई यूनिवर्सल नेगेटिव पे कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा तो वैलिड है नहीं वैलिड है, ये समझना है. फिर ये स्टेटमेंट को देखो, फिर बोलेंगे सम एक्स और वाई. सर इसमें भी नॉट वगैरह नहीं है तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट है. और पूरा सेट नहीं है, एक सबसेट है, तो सबसेट को हम पर्टिकुलर बोलते हैं. तो सम एक्स और वाई का स्टेटमेंट का नाम क्या है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव. फिर सम एक्स और नॉट वाई, तो नॉट लिख दिया तो नेगेटिव, और सम लिखा है तो सबसेट है, इसलिए पर्टिकुलर नेगेटिव. ओके, सो दीज 4 स्टेटमेंट्स, ये 4 स्टेटमेंट का अलग अलग से कंक्लूजन जब निकालूंगा तो ये कंक्लूजन वैलिड है या नहीं वैलिड है, ये आपको समझना है. क्यों समझना है? क्योंकि क्वेश्चंस पे जो डेटा दिया हुआ रहता है, नॉर्मली जनरल ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं, उसमें से एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है और उस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द कंक्लूजन्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अबव पैसेज. समझ में आ रही बात? व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज, ये सब क्वेश्चंस अगर आपको करना है तो ये कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स आपको समझना पड़ेगा, ये चारों स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा. अब यहां देखो कि सर आपने ये गलत लेबलिंग किया, ए बी सी डी लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है, आपने लिखा है ए ई आई ओ. ओके ना, फिलॉसफी जब पढ़ेंगे, लॉजिक जब पढ़ेंगे, तो ये आप यूनिवर्सल अफर्मेटिव का लेबलिंग है ए, यूनिवर्सल नेगेटिव का लेबलिंग है ई, पर्टिकुलर अफर्मेटिव का लेबलिंग है आई, और पर्टिकुलर नेगेटिव का ओ. ठीक है, ए ई आई ओ बोलते हैं. अब इस ए ई आई ओ से फॉर्मूला बनाकर भी इस चारों स्टेटमेंट का मीनिंग समझा जा सकता है या कंक्लूजन समझा जा सकता है. नहीं तो ये चारों स्टेटमेंट के लिए वेन डायग्राम्स यूज करके, ये याद है स्कूल वाला, वेन डायग्राम्स यूज करके भी हम इसके कंक्लूजन समझ सकते हैं. मैं वेन डायग्राम का दीवाना हूं. आई एम नॉट इनटू दिस फॉर्मूला. AEIOU का फॉर्मूला मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आता. ठीक है, मैं वेन डायग्राम से बहुत अच्छा से समझा पाता हूं, समझा सकता हूं, और मैं चाहूंगा भी कि आप वेन डायग्राम से ही सीखें क्योंकि बहुत क्लैरिटी मिल जाता है. अब यूनिवर्सल अफर्मेटिव का कुछ एक्स और वाई की जगह कुछ कुछ लिख के बताऊंगा, तो मैंने लिख दिया एक्स के जगह इंडियंस लिख दिया और वाई की जगह ऑनेस्ट लिख दिया, तो ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट. ये कौन सा होगा? कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन. ऑल या प्रेमिस, ऑल द बॉयज आर क्रिकेटर्स. अगेन एक्स की जगह बॉयज लिखा, क्रिकेटर्स की जगह वाई लिखा.
ठीक है। अब सर ये तो समझ में आता है, लेकिन इसके कुछ भी लिख दो, तो कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी। ऑल पेन्स आर ट्रीज लिख दो। ये एक्स है, ये वाई है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन हो चाहे नहीं हो, स्टेटमेंट में ये कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जा रहा है, उसको समझना है, ना कि चीजों के बीच में जो आपका नॉलेज है उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना है, वो नहीं करना है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक्स का वाई के साथ कोई संबंध है, वो एक्स कुछ भी हो, वाई कुछ भी हो, ठीक है। समटाइम्स वी राइट द यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रीमिस लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल पेन्स आर ट्रीज, आई कैन एक्चुअली से दिस, men are mortal, men are mortal, सिर्फ ऐसे लिख दिया। सर ऑल वाला वर्ड नहीं लिखा, ऑल लिखने की जरूरत नहीं है। जब ऐसे लिखा हो तो इसको कभी भी सम के रूप में नहीं समझोगे। एक्स और वाई अगर लिखा है तो आपको समझना है ऑल एक्स और वाई, ठीक है। इसको सम एक्स और वाई कभी नहीं समझना है। तो जब भी ऑल लिखा हो, नहीं लिखा हो, ठीक है, नहीं लिखा हो तो इसको ऑल के तरह ही आपको समझना पड़ेगा। नाउ लेट्स कम टू द, अब कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रेमिस का कंक्लूजन ड्रॉ करके देखेंगे, वो कंक्लूजन वैलिड है या इनवैलिड है। इस पे हम क्या करेंगे, ऑल इंडियंस और ऑनेस्ट पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, तरह तरह का कंक्लूजन आ सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी आ सकता है कंक्लूजन। हर एक कंक्लूजन को हम देखेंगे कि क्या ये डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स है, या सर इसके बारे में कुछ ज्यादा बोला नहीं जा सकता है, डेटा इनसफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट पे कंक्लूजन अलग अलग ड्रॉ करके उसमें डेफिनेटली ट्रू है, डेफिनेटली फॉल्स है या डेटा इनसफिशिएंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले करना क्या पड़ेगा, सर इसको अगर मैं करना चाहता हूं तो कोई भी स्टेटमेंट लिख दो, ट्रू है या फॉल्स है, मुझे कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट को वेन डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करके देखते हैं कितने किस्म के डायग्राम बना सकते हैं, मतलब ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट को कितने तरीके से दिखा सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन वी डिस्प्ले ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट। ओके, लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन, ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट। आपको क्या लगता है कि ये मैं ड्रॉ कर सकता हूं कि नहीं, सारे इंडियंस ऑनेस्ट हैं, ड्रॉ कर सकता हूं कि नहीं। आप बोलोगे कि सर ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट, आप तो ये कह रहे हो कि सर सिर्फ इंडियंस ही ऑनेस्ट है, ऐसा है क्या, एक बार और सोचो। ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट, ऑल पाकिस्तानीज में आल्सो बी ऑनेस्ट, all Americans may also be honest, all Sri Lankans may also be honest। तो ठीक है, तो इंडियंस तो ऑनेस्ट हैं ही, स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, इंडियंस तो ऑनेस्ट हैं ही, और भी ऑनेस्ट हो सकते हैं, others can also be honest, may also be honest, but that is not the only way you can draw it। This statement can also mean this, isn't it? सारे इंडियंस ऑनेस्ट है, ये भी तो मीन कर सकता है, which means when I say all Indians are honest, I can draw two diagrams, two alternative diagrams. This may also be true, this may also be true, this may also be true। First भी true हो सकता है, second भी true हो सकता है, that is there are two alternatives। You cannot say only this is going to be true, or you cannot say only two is going to be true, both of them could be true। Now we will draw conclusions based on this। Do you understand now that we have got two diagrams हो गया, अब इस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इस पे डायरेक्टली कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करके मैंने क्या किया, पहले इसको रिप्रेजेंट कर लिया, अब इस पे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं। लेट मी शो यू सम कंक्लूजन्स एंड यू टेल मी वेदर देयर आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर डेफिनेटली ट्रू। डीटी माने डेफिनेटली ट्रू, डीएफ माने डेफिनेटली फॉल्स। सर बोला नहीं जा सकता है, इसमें ट्रू लग रहा है, इसमें ट्रू लग रहा है, इसमें फॉल्स लग रहा है, दोनों में ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू होगा, दोनों में फॉल्स होना चाहिए तभी डेफिनेटली फॉल्स होगा, दोनों में ट्रू होगा तभी डेफिनेटली ट्रू होगा, दोनों में फॉल्स होगा तभी डेफिनेटली फॉल्स होगा। एक में ट्रू एक में फॉल्स हुआ तो सर आपको तो मे भी बोलना पड़ेगा। तो लेट अस चेक, पहला क्या लिखा है देखना, ऑल ऑनेस्ट आर इंडियंस, सारे ऑनेस्ट इंडियंस ही हैं। अगर बोलोगे तो सर ये तो इंडियंस नहीं है, ये डायग्राम तो किया जा सकता है, तो ये जगह जो है ये तो श्रीलंकन से पाकिस्तानी भी हो सकता है, तो ऑल ऑनेस्ट आर इंडियंस, सारे के सारे ऑनेस्ट इंडियंस हैं, ये बोला नहीं जा सकता, लेकिन इस डायग्राम में ट्रू है, एक में ट्रू एक में फॉल्स, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, मे बी या डेटा इनसफिशिएंट। ओके, नाउ लेट्स टेक द सेकंड वन, सम ऑनेस्ट आर इंडियंस, कुछ ऑनेस्ट इंडियंस हैं। सारे इंडियंस ही जब ऑनेस्ट हैं, मान लो 100 इंडियंस हैं जो ऑनेस्ट है, मैं ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट का मतलब मैं बोले कि जितने इंडियंस हैं सारे के सारे ऑनेस्ट हैं, ठीक है। मान लो 100 इंडियंस हैं, सारे के सारे अगर ऑनेस्ट हैं
तो 10 भी तो ऑनेस्ट ही होंगे। जब सारा का सारा आम ही पका हुआ है तो एक आम उठा लोगे तो वो पका होगा कि नहीं? पका तो होगा ही। ओके, if all the mangoes are ripened, your father brought a basket full of mangoes and he says all mangoes are ripe, and you check that all mangoes are ripe. Now if you pick up some, are they going to be ripe? They will be, right? So when I say all Indians are honest, okay, this is a universal set. Within the universal set, the subset must be included. So some honest are Indians. This must be true, sir. All Indians are honest का मतलब सब honest तो some Indians तो honest होंगे. Some honest are Indians करो. कुछ honest तो Indians हैं and कुछ honest तो इसमें भी Indians हैं. So this must be definitely true. Now some honest are not Indians. Let's look at the third one. Let me clear the screen and let's look at the third conclusion. Some honest are not Indians. Some honest are not Indians. True, लेकिन इसमें ट्रू नहीं है. इसमें तो सारे ऑनेस्ट इंडियंस हैं, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? मे बी. ठीक है, सो ऑल ऑनेस्ट आर इंडियंस, ये मे बी था, ये डेफिनेटली ट्रू था. नाउ कम टू द फोर्थ वन. इफ यू आर एन इंडियन यू आर ऑनेस्ट. अगर मैं इंडियन हूं तो मैं ऑनेस्ट हूं. पक्का ट्रू है सर, ये तो डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि दोनों में फॉलो करता है. अगर इंडियन माने बाहर तो खड़ा नहीं हो सकता, अंदर ही होना पड़ेगा. इंडियन हो तो ऑनेस्ट हूं, इंडियन हो तो ऑनेस्ट हूं, दोनों स्टेटमेंट बोल रहा है, इसका मतलब ये डेफिनेटली ट्रू. इफ यू आर नॉट एन इंडियन यू आर नॉट ऑनेस्ट. अगर इंडियन नहीं हो यहां, यू आर नॉट ऑनेस्ट, ये तो ट्रू है, इस वाले में ट्रू है, लेकिन इसमें फॉल्स है. सो दिस इज अगेन मे बी. दैट इज ऑल यू नीड टू डू. That means whenever I have this universal affirmative premise, आपके दिमाग में दो डायग्राम चलने चाहिए, और you should draw it on a piece of paper. Draw it on a piece of paper. These two diagrams must be drawn, and then every conclusion must be evaluated. क्या इसमें ट्रू है, क्या इसमें ट्रू है? दोनों में ट्रू है तो ट्रू, दोनों में फॉल्स है तो फॉल्स. एक में ट्रू एक में फॉल्स होगा तो मे बी. Okay, so let's come to the second premise. The second premise, categorical premise, okay, was no boy is a cricketer. No boy is a cricketer. अब सर इसके लिए डायग्राम कितना बना सकता हूँ? एक ही सेट ही बना सकता हूँ, दोनों को डिसजॉइंट सेट ही बनाना पड़ेगा. बॉय को क्रिकेटर से चिपका ही नहीं सकते. नो बॉय इज अ क्रिकेटर. नाउ लेट अस चेक, देयर इज ओनली वन डायग्राम. नाउ लेट अस राइट सम कंक्लूजंस. कुछ कंक्लूजंस लिखते हैं और उस कंक्लूजन को देखते हैं कि डेफिनेटली ट्रू है, डेफिनेटली फॉल्स है या मे बी है. लेट्स टेक द फर्स्ट वन. What does it say? No boy is a cricketer. Or here, what is the conclusion drawn? No cricketer is a boy. No cricketer is a boy. So this is definitely true. भाई इसको तो टच तो कर ही नहीं सकते. बॉय को क्रिकेटर से टच नहीं कर सकते, मतलब क्रिकेटर को भी बॉय से टच नहीं कर सकते, तो ये तो डेफिनेटली ट्रू है. सम क्रिकेटर्स आर नॉट बॉयज. कुछ क्रिकेटर्स बॉयज नहीं है, ये तो डेफिनेटली ट्रू है. ये डेफिनेटली ट्रू है, फॉल्स है बताना. सम क्रिकेटर्स आर नॉट बॉयज. सारे के सारे क्रिकेटर ही जब बॉय नहीं, तो मान लो 100 क्रिकेटर है, 100 के 100 क्रिकेटर बॉय नहीं है, तो 50 क्रिकेटर भी तो नहीं होंगे, एक भी तो नहीं होगा. ठीक है, तो सम क्रिकेटर्स आर नॉट बॉयज, दिस इज डेफिनेटली ट्रू. लुक एट द सेकंड वन. सम बॉयज आर नॉट क्रिकेटर्स. सब कोई लड़का ही जब क्रिकेटर नहीं है, तो कुछ लड़के क्रिकेटर नहीं होंगे, ये भी तो ट्रू ही है. इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, देन दिस कंक्लूजन इज आल्सो ट्रू. नाउ यू कैन नॉट बोथ बी अ बॉय एंड अ क्रिकेटर. लड़का और क्रिकेटर एक साथ नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है. सो दिस इज आल्सो ट्रू. यू आर नीदर ए क्रिकेटर नॉर अ बॉय. अब इसमें मैं बोल रहा हूं नो बॉय इज अ क्रिकेटर. मान लो यहां पर मैं कोई लड़की आ गई और उसको मैं बोलता हूं यू आर नीदर ए क्रिकेटर नॉर अ बॉय. ठीक है, गर्ल के बारे में तो बात ही नहीं हुई सी, नहीं हुई सर. ठीक है, तो यू कौन है ये बिना समझे, आप क्रिकेटर नहीं हो बॉय नहीं हो, ये बोल रहा हूं. यू आर नीदर ए क्रिकेटर नॉर अ बॉय. पॉसिबल है, आप बाहर खड़े हो, आप यहां भी नहीं हो यहां भी नहीं हो, ये ड्रॉ तो किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए डेटा मेरे पास नहीं है. यहाँ पर मैं ये क्रिकेटर और बॉय के अलावा कोई डेटा मेरे पास नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे मे बी. जो स्टेटमेंट में नहीं है उसके बारे में अगर मैं कुछ लिख दूं तो आप क्या बोलोगे सर, उसके लिए डेटा दोगे तब तो. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी तो है. यू आर नीदर क्रिकेटर भी नहीं हो, बॉय भी नहीं हो, गर्ल हो, या एक ओल्ड मैन हो तो सकता है. ठीक है, लेकिन उसके लिए डेटा नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मे बी. जब डेटा नहीं है तो फॉल्स नहीं बोलेंगे, डेटा नहीं है तो बोलेंगे नो डेटा. ओके, इज दैट क्लियर? सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. नाउ लेट अस कम टू द थर्ड premise. थर्ड premise ये है, some apples are ripe. Some apples are ripe. अब इस पे ध्यान रखना,
This is particular affirmative premise, and there are four possibilities, four different alternative diagrams possible. Okay, I'll explain. Sir, आपने तो एक ही लिखा है. I'll show you the other three also. पहले ये बताओ कि is it a good adequate representation of some apples are ripe? Some apples are ripe के लिए इसको ड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो बोले सर ये तो है ही है, ये तो बचपन से आपने करता है, ठीक है? So some x or y, so this I can always draw, sir. Okay, there is some intersecting area, some apples are ripe. But my question is, can you also draw this and say this is some apples are ripe? Some apples are ripe. Of course it is. Some apples are ripe, some are not. This is also a possibility. ये draw कर सकते हो, तो ये भी तो draw कर सकते हो. There are two alternatives now. There are two more alternatives. Let's see. Let me show you one more. Now look at this. Some apples are ripe. So this is a coinciding circles. There are two circles coinciding. Is it possible? How is this possible? This is all apples are ripe, you would say. But if I draw this, this is also true, because you see, what do you want? You want some apples to be ripe. What have I given you? The universal set. You want the subset to be true. You just want this to be true. But I give you a bigger set. If I give you a bigger set, then this must be true. If you don't understand this, then let me give you another example. Some apples are ripe. Now let's take another example. You go and tell your daddy that you require some money to buy a mobile because you already have some money. You want some money. Dad asks you how much. You say 10,000. Okay. Now the phone actually costs you 25,000. Okay. But you went and told your dad, I am falling short by 10k, so I want some money. Not all, because I already have 15,000 rupees. Okay, I have 15,000 rupees and you are asking for some money. But if your dad gives you 25,000 rupees, you wanted some money and your dad gave all. So did he give you some money? Did he give you 10,000 rupees? Of course he did. Because you wanted 10,000 rupees and your dad gave you more than what you wanted. He gave you more than what you wanted. So that 10,000 is always there. That 10,000 is always there because he has given you more than 10,000. Okay, so when I say some apples are ripe, I can always draw this diagram. All apples are ripe, which will mean some apples are, of course, ripe. Therefore, this third diagram is also possible. Did you understand? Try to understand this example. You wanted 10,000 rupees, your dad gave 25,000 rupees. You wanted some, your dad gave all. So did he give you some? Yes, he did. So when I want some apples to be ripe, I'm drawing this. So what is this? This is a possibility. Now always remember, this is another alternative. This is not the only diagram. We can draw this also. We can draw this also. Number 1 is possible. Number 2 is possible. Number 3 is possible. There is one more diagram possible. Now try to understand this. What does this say? Some apples are ripe. And what is this? All apples are ripe. You wanted some to be ripe. I gave you the entire set. So when this is true, when this is a possibility, this is also a possibility. All apples are ripe. Okay. So when I say some x or y, when I say particular affirmative premise, then there are 4 possibilities. These 4 diagrams you should always keep in mind when you're doing syllogistic questions, and then when you're doing critical reasoning questions based on syllogisms. Now let's try to start again. Let's start this. Okay. Some apples are ripe. This diagram is possible. Some apples are ripe. This diagram is possible. These 2 are easy to understand. Now you wanted some apples to be ripe. I give you the universal set. Therefore, some apples are ripe. This is correct, and this is also correct. There are 4 alternatives. So any conclusion we draw must take into account all these 4 diagrams. Any conclusion that is true in all the 4, true in this, true in this, true in this, and true in this, will be definitely true. False in all of them will be definitely false. True in one and false in the other. Okay, true in one and false in all the 3, it is maybe.
Sir, false in true in three, and only false in one, even then it is maybe. So if you get the same answer, true, 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 in all the diagrams, then the conclusion is definitely true. If it is false in all the diagrams, it is definitely false. It is true in one and false in the other, then it is maybe. So let us check the first one. Some ripe are apples. Some ripe are apples. Let's take the first conclusion. Some ripe are apples. So true in this. All ripe are apples. Therefore, some ripe must be apples. When all of them are ripe, when all of them are apples, when all the ripe are apples, some must also be true. So in this also it is true. In this also it is true, and in this also it is true. Therefore, when I say some apples are ripe, then some are ripe or apples also becomes true. This is definitely true. All apples are ripe. So false in this. All apples are ripe. False in this. All apples are ripe. True in this. All apples are ripe. True in this. Therefore, it is true in two and false in another two. Therefore, we say maybe. No apple is ripe. So there is no disjoint set at all, which means this is definitely false. There is definitely false. No apple is ripe. You don't have that disjoint set even once to call it maybe. Okay, all of them are intersecting or overlapping. So no apple is ripe, definitely false. All ripe are apples. All ripe are apples. See here, let's take the third one and see. All, no, the fourth one and see. All ripe are apples, false. All ripe are apples, true. All ripe are apples, true. All ripe are apples, false. Therefore, again, this is maybe. Then neither an apple nor being ripe is a possibility. Neither an apple, not being an apple, and not being ripe is a possibility. So if there is something standing here outside all these diagrams, it's a possibility, and it does not mention anything about the outside area. So this is, if it is a possibility, it says it is a possibility, and you know that it is a possibility. Therefore, this is definitely true. Did you understand the statement? Did you understand the statement? Neither an apple nor being ripe is a possibility. The conclusion itself says it is a possibility. And what it has come out to is possibility. Therefore, when I say that it's a possibility, then you're actually saying the truth. If I say neither being an apple nor being ripe must be true, then you would say maybe. If I change this diagram, if I change this statement, if I say must be true, then you would say no, this may also be false. Therefore, you would say maybe. But the sentence written here is, it's a possibility. It's a possibility. What you're saying is maybe. You are already saying, the conclusion itself is saying maybe. Therefore, it must be definitely true. Did you understand that? If you do not understand it, don't bother yourself too much about this for the time being. Okay, later on we'll come back to this again. If you're an apple, you must be ripe. I am an apple and I'm not ripe. So this is false in this. I am an apple and I'm not ripe is a possibility, right? False. I'm an apple, I'm not ripe. I'm an apple, I'm ripe. I'm an apple, I'm ripe. I'm an apple, I'm not ripe. Okay, so what do you see? It's possible. Let's not say possible. If you are an apple, you must be ripe. Maybe, may not be. So here itself it says maybe. So we don't have to check others also. In the first diagram itself it says maybe. So if you are an apple, you must be ripe. No, this is maybe. Okay, so we are done with the three diagrams, the three premises, that is the universal affirmative, the universal negative, and the particular affirmative. Now let's come to the last one, which is particular negative premise. Some girls are not singers. Some girls are not singers. So how can we represent this particular premise in diagram, sir? इस premise को diagram में कैसे draw करें? तो some girls are not singers, sir, ये तो हो ही गया. Some girls are not singers. ये तो draw किया ही जा सकता है. This can also be drawn. Some girls are not singers, you see. This can also be drawn. There is one possibility drawing it this way. There is another possibility drawing this way. Or I can say all girls are not singers, because if all the girls are not singers, some will obviously not be singers. If no girl is a singer, then some girls are also not singers.
Some girls are also not singers. So this is also a possibility. This is also a possibility. Therefore, when I say some girls are not singers, there are three possibilities: drawing this diagram, drawing this, and drawing this also. Now let's check. I'm going to draw conclusions based on these three diagrams and say whether it is true or false. Let's see. No girls are singers. No girls are singers. False in this. Or maybe in this. No girls are singers. This part, no girls are singers, is true. Here, girls are singers. So in the first diagram itself, it is maybe. Okay. The same thing happens here also. In the second diagram also, it is maybe. Okay. And in the third one, it is no girls are singers is true. No girls are singers is true. So maybe in two and true in the last one. Therefore, maybe. You are either a singer or a girl. You are either a singer or a girl. Okay, see, look at this. You are either a singer or a girl alone, and you are a singer and a girl. That's also possible. So therefore, I cannot say this. You are either a girl or a singer. This comes out to maybe. In this, it is true. All in the other two, it is maybe. Okay, so maybe. So if I'm not a singer, if I'm not a singer, okay, if I'm not in the singer part, then if I'm not a singer, I am a girl. I must be a girl. Can you say that for certain? If I'm not a singer, then I must be a girl. Maybe, may not be. So you can be standing outside. If you're not a singer, it is not necessary that I should be there in girls only. I can also be outside. Okay. So if I'm not a singer, I'm a girl. This is maybe. See, just look at the conclusions. These are all play on words. Okay. If I'm a girl, I'm a singer. You can't say that. If I'm a girl, I'm a singer. Maybe. Okay. Some singers are not girls. So some singers are not girls. True here, but then some singers are girls here. So this is also maybe. So what do we see? Sir, in all these conclusions you have drawn have come out to maybe. So is there any way we can draw a definitely true conclusion with some girls are not singers? Can we draw definitely true conclusions? No. Whenever there is some girls are not singers, whenever there is a particular negative premise, you will never be able to get a definitely true conclusion. You'll never be able to get a definitely true conclusion. Okay, so the four statements are done now. The four statements are done now. Okay, now you have to memorize the diagrams. For all x or y, we have two diagrams. For no x or y, we have one diagram. For some x or y, we have four diagrams. And for some x or not y, we have three diagrams. And for some x or not y, it is not possible to draw a definite conclusion, definitely true conclusion. Now, we need to do some questions. Now, these questions, try this. See, based on the four statements, I have given you a question. Now, how do we do this? There are three separate premises. There are three separate premises. Related, unrelated, we don't know. We'll have to read and understand whether it's related or not related. Let's see. There are two terms, engineers, villagers. Villager and nurse. So villager and villager, there is a connection. And villager is a nurse, and nurse, there is a connection. Which means all the three statements are in some way related. All the three premises are related. So taking the three premises together, can I reach these conclusions? And if I can reach these conclusions, what is the option you will choose? That is the question. Okay, so let us check. First of all, let's take the first premise and draw a diagram. Okay, the first diagram, what we want is all engineers are villagers. Now, there are two possibilities. When I say all engineers are villagers, there are two possibilities. I have drawn only one, but we can also draw two. All villagers are engineers. I can also do this. Villagers are engineers. Okay. You want to draw both the diagrams, you can do that. If you don't want to draw both the diagrams, that's also okay if you can think it then. All engineers are villagers, and this we can keep in mind, or you can even draw it. Now, no villager is a nurse. So once I've drawn the first diagram, I'll not draw a separate diagram. I'll not draw a separate diagram. I'll draw a diagram according to this itself.
because already there is a diagram and villagers are related. Therefore, I'll draw a diagram based on this set. Okay, that is over this. So no villager is a nurse. How can I draw that, sir? Look at this. No villager is a nurse. The nurse diagram should not touch villagers. Okay, so no villager is a nurse. Okay, this is one way of drawing it. Then the third one, all nurses are managers. Now all these nurses have to be managers. So even if here villagers are engineers, suppose for the second diagram, no villager is a nurse, I would have drawn nurse here. Okay, we could have this diagram, or we could have this diagram. Okay, now all nurses are managers. So any diagram you draw must be equivalent to nurse or bigger than nurse, right? So it must be like this. Let me take off the second diagram and show you. Okay, so no villager is a nurse, and the third statement says all nurses are managers. So I can draw a diagram like this. All nurses are managers. Okay, but who told you that this diagram must only be bigger than nurse or equivalent to nurse? It can be a very big circle, managers, and I can draw it on the entire screen and say it is managers. It's my wish. In which case, what we understand is when I say managers, all nurses are managers. The managers doesn't talk about villagers, doesn't talk about engineers. So whether we touch it or we don't touch it should not matter. Which means managers can be drawn this way. Managers को ऐसे draw कर सकता हूँ, नहीं ऐसे draw कर सकता हूँ, या तो ऐसे भी draw कर सकता हूँ, इससे भी बड़ा draw कर सकता हूँ, सेकंड वाला भी draw कर सकता हूँ. देखो मैनेजर्स को मैं विलेजर इंजीनियर के साथ मिला के ड्रॉ करूं, सबसे ऊपर में ड्रॉ कर दूं, राइट? डू यू अंडरस्टैंड नाउ? बिकॉज मैनेजर्स एंड नर्स का सिर्फ कनेक्शन दिया हुआ है, मैनेजर्स एंड नर्स का कनेक्शन दिया हुआ है, विलेजर्स इंजीनियर्स का कनेक्शन नहीं दिया हुआ है. तो मैं टच करूं विलेजर्स इंजीनियर्स को या नहीं करूं, मेरी मर्जी. तो लेकिन कंक्लूजन ड्रॉ करते समय आपको याद क्या रखना पड़ेगा, मैनेजर्स आपके अलग भी हो सकता है, सिर्फ नर्स के ऊपर भी हो सकता है, विलेजर्स और इंजीनियर्स को क्रॉस भी कर सकता है. ये सोचते हुए अब कंक्लूजन को वैलिडेट करते हैं. कंक्लूजन में आओ. नो इंजीनियर इज अ मैनेजर. ये पक्का बोल सकते हो सर. ये डायग्राम होता, ये डायग्राम जो लिखा हुआ है छोटा वाला जो मैनेजर सर्कल है, ये इसमें तो ये ट्रू है, इसमें तो ये ट्रू है. लेकिन बड़े वाले में देखना, नो मैनेजर इज एन इंजीनियर, इसमें ये ट्रू नहीं है. ठीक है, नो इंजीनियर, ये यहाँ पर में फॉल्स है. मतलब एक में ट्रू हो रहा है, एक में फॉल्स हो रहा है. तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, मैनेजर. इसको क्या बोलना पड़ेगा, मे बी. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इंजीनियर मैनेजर नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर्स इज अ पॉसिबिलिटी. सर इस सर्कल को, ठीक है, इस सर्कल को आप बड़ा कर देते हैं, ऑल विलेजर्स ऐसा कर देते हैं, विलेजर पूरा को ही आपने घेर लेता, आप घेर लेते हैं, तो क्या दिक्कत होती है? पूरे ये मैनेजर्स जो है वो ऐसे ड्रॉ कर दिए होते तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं था. पूरे इस पे ही मैं ड्रॉ कर देता हूं. ठीक है, ऐसे भी कर सकता था. Which case all villagers being managers is a possibility. सर ये तो डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि आपने ये सब पॉसिबिलिटी बोला है, आपने खुद ही बोला है कि ये पॉसिबल है. जब पॉसिबल बोला है तो ये तो डेफिनेटली ट्रू हो जाता है. ठीक है, अब देखते हैं. ओनली वन फॉलोस. सर ये तो मे भी आया था, नो इंजीनियर इज मैनेजर, ये तो मे भी आया था. ठीक है, सेकंड वाला देखना, ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये तो सर डेफिनेटली ट्रू आया था. ठीक है, बोथ 1 and 2 फॉलो, ये तो हो ही नहीं सकता, पहले वाला तो फॉलो कर ही नहीं रहा, दोनों इकट्ठे फॉलो करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता. नीदर फॉलोस, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला सेकंड वाला तो फॉलो कर ही रहा है. सो द आंसर मस्ट बी, ओके, द आंसर इज ओनली बी. सिर्फ ये फॉलो करता है, और ये डेफिनेटली ट्रू क्यों हुआ? क्योंकि इस सब पॉसिबिलिटी आपने लिख रखा है सर, तो पॉसिबिलिटी तो है ही, पॉसिबिलिटी तो है ही है, तो इसको डेफिनेटली ट्रू बोलता. अगर मान लो ये स्टेटमेंट ऐसा होता तो ये फॉल्स हो जाता है, समझना इसको. मान लो यहाँ ये सब पॉसिबिलिटी नहीं लिखकर अगर ये होता ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर्स, ये मस्ट बी ट्रू लिखा होता, तो पक्का इसको भी मे भी बोलते हैं, इसको भी मे भी बोलते हैं, फिर नीदर फॉलोस वाला बात हो जाती, या ईदर फॉलोस होना चाहिए था, वो तो है नहीं. ठीक है, मस्ट बी ट्रू होता तो ये भी हमारा मे भी हो जाता, ये भी मे भी हो जाता, ये भी मे भी हो जाता, और ये भी मे भी हो जाता. लेकिन मस्ट बी ट्रू नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है ये सब पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो हो तो सकता ही है, हमने देखा था, इसलिए डेफिनेटली ट्रू. ओके, लेट्स कम टू द
Now, in this question, let's take the first statement. It says some pants or shoes. Now, आप जानते हो कि some pants or shoes जैसे ही करता हूँ, when we say the particular affirmative, we can draw 4 diagrams. I'm drawing one, but I'm keeping the other things in mind. So some pants or shoes, one. The second one is one I've drawn. Now to the next one. Some shoes are slippers. The second one says some shoes are slippers. So slippers have to be drawn on these on the first diagram, that is some pants or shoes. Where all can we draw slippers? Now slippers can be like this, only touching shoes. Some shoes are slippers का मतलब क्या है? कुछ shoes slippers हैं. So I can draw slippers only touching shoes, or I can also draw this where I make slippers touch pants and shoes, because the statement talks about only shoes and slippers. It does not say anything about pants. So some shoes actually may be slippers. Some some shoes are slippers. That is given. You see, even in this case, some shoes are slippers. So some shoes are slippers. This is always there. But whether it has got any connection with pants or not, we do not know. So maybe it does not have, pants does not have any connection with shoes, or pants do have some connection with slippers. We do not know. So we can draw the slippers at 2 places, or even this way. I can also put slippers this way as a circle which covers pants, shoes, etc. Okay, because pants, slippers with pants, we do not know. There may be a connection, there may not be a connection. But with slippers, there is always a connection. So if I draw this way, a big slipper circle covering shoes, it means all shoes are slippers, which means all shoes are slippers means some shoes are slippers. वो तो होता ही है. All shoes are slippers कर दूंगा तो some shoes are slippers तो हो ही सकता है. So the slippers can be drawn in 3 different ways. Okay. Now let us see. All slippers are shirts. All slippers are shirts, which means the slippers can be shirts. Coinciding circle or a bigger circle. All slippers are shirts means shirts has to be a bigger circle or equivalent to slippers. The same thing can be done for this also. Shirts. Okay. And the same thing can be done for this also. Okay. This is all slippers are shirts. Now again, we do not, slippers and shirts do not have any connection with pants. Okay. It may have a connection. It may not have a connection. It may have a connection, it may not have a connection. Do you understand that? It may or may not have a connection. So now let us check the conclusions. Conclusions को check करते हैं. At least some shirts are pants. Can't say, because I don't have to draw shirts touching pants. I can also draw it only on this. Okay, so which means at least some shirts are pants. At least some shirts are pants is a maybe. Okay, then no shirt is a pant. Again, no shirt is a pant is one, it is possible, and no shirt is a pant is also a maybe. Okay, and some tables are chairs. So this has got no meaning at all, because we don't have anything about tables and chairs. So again, some tables are chairs, maybe, may not be, because we do not have any of the terms here. So we cannot talk about something that is not mentioned here. So maybe it is there, maybe it is not there. We cannot say anything from these premises. These premises do not have anything. So this is a DI, maybe this also. But let us check the options now. Only one follows, no. Only two follows, no. Okay, either one or two follows, of course. Now this is correct. Let us check. Now this will confuse most of you. Let us check this option. I'll tell you. See, now either one or two should follow, right? If you see the slippers, I can draw it without touching pants, or I have to touch pants. There are only two ways. Slippers, okay, shirts or slippers, because shirts is equivalent to slippers. I've already shown you that. Okay, shirts. So slippers or shirts, whatever you call them. Okay, so at least some shirts are pants, or at least some slippers are pants is a maybe, and no shirt is a pant is a maybe. But either of the two conditions must exist. Either
These shirts will not touch pants or they will touch pants. That must exist. Either you draw it like this or you draw it by touching. Therefore, the answer should be C, because one or two must exist. There is no third way. You cannot take the slippers and draw it here and say, ki, sir, we cannot draw slippers and shirts here because some shoes are slippers. So there can be no disjoint set. So there is only one way out. Some shirts are not pants, and some shirts are pants. No shirt is a pant is a possibility, or at least some shirts are pants is a possibility. This must be the only way we can say it. So therefore, either one or two. C is the correct option. With that, we come to the end of categorical syllogisms. That is how to use the four categorical statements: all x are y, some x are y, some x are not y, and no x are y. And I've shown you some questions also. Now do all the questions and bring your doubts to the doubt class. Okay, it's very important because once you understand syllogistic questions well, then you can also do critical reasoning well. Critical reasoning भी बहुत अच्छा से होने लगता है. ठीक है बेटा? Okay.